Ladies and gentlemen, a very good evening to one and all. I am Sarthak Gupta. We are the hosts of this program. On behalf of the Honorable Principal, teachers, and students of Dalimss Sunbeam School Ramkatora, we extend a warm welcome to our distinguished guests and parents who have spent their precious moment to witness today's program. We welcome you all to the annual function Srijan 2023 of Dalimss Sunbeam School Ramkatora. Our program this evening is a certain spectacle bound to take you on a journey across the rich tapestry that is our diverse culture. We take pride in being a part of this iconic institution that stands firm and is pioneer in the field of education after completing 51 years of excellence. It constantly has instilled the values and ethos in children's minds as we are the future of tomorrow. It has made us believe in Vasudhaiv Kutumbakam. We take the entire world as our family. Undoubtedly, we belong to a nation where we take the entire universe as our family. So, let's be together. Let's move together. Let's be whole together. The unity in diversity. It's an honor to address this distinguished gathering to this annual function, Srijan 2023. We all know light brings life to everything around us. From the smallest blade of grass to the tallest tree. From one place to another place. Let us together brighten this evening with the lighting of the lamp. As we light this lamp, let it symbolize eradication of darkness from our lives and the world. Now, I request the eminent guest of today with the President, Director, Additional Directors, Dean of Academics, and the principals of all the branches to kindly light the lamp. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Just as the lamp enlightens the surroundings, may wisdom and awareness shine upon us. The rhythmic beauty of music is blended with instruments, strings, and voice. We are now going to join with the rhythms of orchestra as the starter dose of today's gala. It's time to get mesmerized by the performance of students of Dalimss Sunbeam School Ramkatora. Can we welcome them with a huge round of applause?
That was a spectacular performance. Please put your hands together for them. You all really made this auditorium filled with the reverberance of your tune and rhythm. Music, an art form, a remedy. And this wonderful performance has truly healed our weary souls. From our young dazzlers to our senior achievers, each one of them fiddled with our heartstrings along with their instruments. They have indeed made a long-lasting impact on our minds. So, with another round of applause, let's appreciate the orchestra of Dalimss and Ramkatora. It's a place where the students not only don the armor of knowledge, but also adorn themselves with the jewels of skills, making each one of our warriors dazzle with their unique light. And today, I proudly stand before you as we raise the curtain to a show where the students of our school will create a crescendo of talent, peaking towards global harmony. India is a nation that is rich in culture and legacy. In India, we have vibrant and distinctive traditional practices. India has always been popular for the customs of hospitality. According to Indian culture, we follow the concept of Atithi Devo Bhavaha and treat every guest as God. So, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce our chief guest, Dr. Bihari Lal Sharma. Audience, please put your hands together for Dr. Bihari Lal Sharma. Professor Bihari Lal Sharma, Vice Chancellor of Sampurnanand Sanskrit University, is a PhD in Phalit Jyotish Sanskrit from the prestigious university, namely Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi in the year 1999. Dr. Sharma has been teaching in the Department of Jyotish Sanskrit at Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi since 1997. In the capacity of Assistant Professor, Reader, Associate Professor, and currently working as Professor in the Department of Jyotish. In addition to the teaching and research activities, he has been carrying out the responsibility of the Director, IQAC, Chief Proctor and Nodal Officer, Student Grievance Cell in SLB SNS University, New Delhi. Among many, Professor Sharma has a unique achievement of being the recipient of gold medal, not only in the field of Jyotish but also in all other disciplines run by Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi in 1993. Professor Sharma has a wide and in-depth knowledge of Sanskrit Shastras in general and Jyotish Shastras in particular. He has a large number of publications in his credit. Till date, he has published 4 books, namely Medical Astrology, Ratna Vigyanam, Temple Vastudev Prasad Vastu Vidhanam, and Bhartiya Vastu Vidya ke Vaigyanik Aadhar, along with numerous articles in various prestigious journals. So, I would like to request our Honorable President of the school, Dr. Pradeep Baba Madhok, our respected Director of the school, Mrs. Pooja Madhok, along with Additional Director, Mr. Mahir Madhok, to please ascend the stage and do the honor. I also request Professor Bihari Lal Sharma to please be on the stage. Sir, please. Ma'am, please. Audience, please welcome sir on the stage with a huge round of applause. We are also fortunate to have with us the presence of Dr. Prithvish Nag. Dr. Prithvish Nag is the director of Sherpa Group of Educational Institutions, Varanasi, and the ex-vice chancellor of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, DDU Gorakhpur, Sanskrit Vishwavidyalaya,
Gopi Rajshri Tandon Open University, Prayagraj. Sir is a gold medalist in the field of geography and has received an honor during his course of degree for MA and MSc from BHU. He did doctoral research on South Central Africa School of Orientation of African Studies, University of London. So I would like to request Mr. Dr. Prithrish Nag to please be on the stage. And I also request our respected principal sir to please escort sir. Audience, it indeed is a great honor to have such a personality with us. Please welcome him with a huge round of applause. Thank you, sir. Thank you, sir. We are also fortunate to have with us the presence of Ajit Singh. He's the special guest of today's evening. May I call Mr. Ajit Singh to kindly be on the stage for felicitation. I request principal sir to please escort sir. Ajit Singh is the founder of Gudiya India. Gudiya India began in 1988 when Mr. Ajit Singh adopted 3 children from the red light area. He began his activism during college days and got deeply influenced by social justice questions as guaranteed by our constitution. Subsequently, this led him to register Gudiya to protect women and children from the flesh trade and human trafficking. His recent work includes formulation of must-talk legislation on human trafficking, led by interformulation of must-talk legislation and NHRC SOP for combating trafficking, whereas a member of the committees. Thank you, sir. Please be comfortable at your seat. Dalimss Sunbeam School is pioneer in shaping confident minds. Our school has envisioned a brighter future for the students. The brilliant students of our school exhibit the qualities which help them not only in achieving their goals, but also glory of success. They are imbibed with the values and morals that exemplify discipline, compassion, and zeal for learning. Dr. Pradeep Baba Madhok, the president of Dalimss Sunbeam Group of Schools. He believes in empowering children to become the best possible versions of themselves. His ambition today has translated into a business empire renowned across the country. To run this institution at this magnitude, we have profound leadership. It is headed by our energetic and passionate leader, Mr. Mahir Madhok. May I now request the revered President Sir and Additional Director to come on the dais and offer a formal welcome to the gathering. Jai Hind to all who are present here. और आज के इस मौके पे when we are celebrating the success of G20 Mahasammelan that was held recently on 9th and 10th of September in New Delhi, the final Grand Day program. So we are today celebrating that success through our students
and through their creations. And as we stand here, along with me is Mr. Mahir Madhok, the additional director of the group. So how are we doing today? Well, we are doing good. बहुत ज़्यादा बारिश है, सब लोग को डिले हुआ, but it's all good. एंड में सब लोग यहाँ पे हैं, हम लोग सब हैं, और बच्चों का इंथुजियाज़म देखने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं. और पेरेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे मैंने देखा इसके पहले वाले में भी कि आप लोग भी आज कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान लेने के मूड में नहीं है कि हम यहाँ खड़े होके अंग्रेज़ी में बड़ी बड़ी बातें करें. और हम लोग उस मूड में भी नहीं है कि हम आपको वो ज्ञान दें आज. हाँ, तो इसलिए हम सब के सब आज बहुत ही फन लविंग मूड में हैं. और इस फन लविंग मूड के पहले अपने बड़ों का और अपने से कहीं ज़्यादा जो अचीव्ड लोग हैं उनकी इज़्ज़त करना हमारा परम धर्म है. सो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ मैं आज के चीफ गेस्ट हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर साहब हैं श्री बिहारी लाल शर्मा सर, उनका तहे दिल से ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, स्टाफ, एवरीबॉडी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप हम लोग के बीच आ जाए, बच्चों को आपका आशीर्वचन मिलेगा. साथ में कहना चाहिए बेटा कि प्रोफेसर प्रीतीश नाथ यहाँ पर हैं, जो एक्स वाइस चांसलर रहे हैं विद्यापीठ के, काशी विद्यापीठ के. सर का साथ हम लोग के साथ में इट वाज लाइक अ जर्नी. सर हमारे गार्डियन भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, मार्गदर्शक हैं. एंड सर योर प्रेजेंस इटसेल्फ is such a motivation and inspiration to us. And thank you so much for making it today. और साथ में मिस्टर अजीत सिंह जो एक संस्था बेटा गुड़िया के नाम से आपकी संस्था है, न जाने कितनों की मदद करते हैं और सेवा करते हैं. और बच्चों के बीच में आपका आना एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है. हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं आपकी जैसी शख्सियत से. और पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल मैं हम लोग आपको बोर नहीं करना चाहते. और जल्दी जल्दी मैं माहिर को बोलूँगा कुछ अच्छी चीज़ें बोलो जिससे इनको पता चले कि इस साल तुम क्या नया कर रहे हो स्कूल में. अच्छी चीज़ें तो बहुत हैं. सबसे पहले तो हम लोग चालू करेंगे हम लोग के डायलिम्स पॉडकास्ट के टॉपिक पे. आजकल बनारस के सारे जर्नलिस्ट सोच रहे हैं कि डायलिम्स के बच्चे हम लोग का काम क्यों करने लगे हैं. डायलिम्स के सारे बच्चे सारे पर्सनालिटी से ऐसे इंटरव्यू करते हैं जैसे कोई हार्ड क्वेश्चंस कोई जर्नलिस्ट पूछ रहा हो. ये सब पॉसिबल है आप सब पेरेंट्स की वजह से, जिन्होंने अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिया. सारे टीचर्स जो अपने बच्चों को और एंथुजियाज्म देते हैं कि तुम लोग जाओ पॉडकास्ट पे जाके जो पूछना ही पूछो. ये मत सोचो कि तुम्हारे प्री रिटन क्वेश्चंस क्या हैं, जो मन में आए पूछो. एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू यू. थैंक यू सो मच. एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा टू आवर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि भारत, India is no more underdeveloped country. We were counted as underdeveloped, we were counted as developing, but this G20 conference has proved us to be in line to be one of the strongest economies in the world. Right now, we might be on the 4th biggest economy, but I'm sure that very soon in the coming years, we will be among the top 3 world economies, and that will be an achievement. ऊपर नीचे upside and downside are a part of life. इसमें ज़रूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा गेन हो. इस तरह के टारगेट्स मीट आउट करने के लिए बहुत सी सेक्रीफाइसेस होती हैं जो हम लोगों को एज इंडियंस तैयार रहना चाहिए. पर सबसे अच्छी चीज़ कि 1982 के बाद, मुझे याद है आई वॉज इन क्लास 8th, यू नो दिस, व्हेन वी हैड दिस नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली. सो दैट वाज 1982, क्लास 8वीं में था. तब से कितनी जनरेशन्स बीत गई होंगी और अब जाके एक वर्ल्ड लेवल का इतना बड़ा क्रिएशन हुआ दैट जाते जाते इस G20 सम्मेलन से द नेक्स्ट वेन्यू दैट इज रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, उसका प्रेसिडेंट भी बोल के गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि भैया तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, अब हम कैसे करेंगे. ही वॉज नर्वस. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री. और इन्हीं शब्दों के साथ आई थिंक बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं नहीं. बस लास्टली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा टू ऑल द पेरेंट्स. दिस ईयर 2024 is the year of architecture development in Dalimss Sunbeam Global School Ramkatora.
इस बार इस साल हम लोग जितने चेंजेस ला रहे हैं, नई क्लासरूम्स ला रहे हैं, एसी बसेस ला रहे हैं, नया टॉडलर्स ब्लॉक का रेनोवेशन ला रहे हैं, एंड कैम्ब्रिज भी हम लोग में आ गया। इतना चेंज आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा डायलिम्स रामकटोरा में इससे पहले। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल जो आप लोग हम लोग का इतना साथ देते हैं, एंड लेट्स एंजॉय द फंक्शन। बस इन शब्दों के साथ लेट अस एंजॉय द स्टूडेंट्स टुडे, इनकी क्रिएशंस एंजॉय करते हैं। और आप सबकी तरफ से मैं अपने बेटे माहिर को एक सलाह देना चाहूँगा कि ठीक है आप जवान हैं लेकिन हम भी कम नहीं हैं, आइए। Thank you, sir, for your precious words. We are privileged to have with us today Honorable Chief Guest, Professor Bihari Lal Sharma. I humbly invite sir to share his words with the gathering. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महनीय संस्थान के प्रबंधक और यहाँ के अध्यापकगण, इस संस्था के ओजस्वी और मनस्वी छात्रगण, अभिभावकगण और अन्य सभ्य श्रोता देवी और सज्जनों, अभी मिस्टर मधोक जी ने कहा कि ऐसे समय में लोग भाषण सुनना पसंद नहीं करते। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि जब खुशी का उत्सव हो, पारितोषिक बंटने वाला हो, बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर हो, तो स्वाभाविक है कि भाषण अच्छा नहीं लगता। लेकिन चूंकि विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी देश का भविष्य है, संस्थाएं समाज को दशा और दिशा इन दोनों को ठीक करने के लिए होती हैं और शिक्षा इसका सबल और प्रबल माध्यम होता है। और शिक्षा का दान जो संस्था कर रही हो, जिसमें इतने समर्पित अध्यापक हों, लगनशील कर्तव्यपरायण अभिभावक हों और मनस्वी और ओजस्वी छात्र हों, तो वह संस्था भी निरंतर आगे बढ़ती है और उस संस्था के माध्यम से समाज भी आगे बढ़ता है और समाज के माध्यम से देश भी विश्व गुरु की ओर बढ़ने के लिए तत्पर होता है। मैं सचमुच में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अध्यापकीय दोष होता है, जब उनको मंच मिलता है तो कम से कम 1 घंटा तो बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैं आपकी मनस्थिति को समझ सकता हूँ, लेकिन 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम धार्मिक बने, और जब मैं ये कहता हूं कि हम धार्मिक बने तो मेरा मकसद ये कहने का नहीं है कि हम तिलक चंदन लगाएं, भगवा वस्त्र पहने, केवल तभी हम धार्मिक हों। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा करते हुए जो कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण कहे गए हैं, जिनमें पहला है धृति, धैर्य, पेशेंस। सारे का सारा धर्म का भवन धैर्य की नींव पर खड़ा है। जिस इंसान में धैर्य नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता, और धैर्य की परीक्षा हमेशा आपत्ति में होती है। सामान्यतया तो हम सब धार्मिक बने रहते हैं, तो ऐसे दिव्य गुणों को धारण करने वाला जो व्यक्ति है वही धार्मिक कहलाता है, जिसमें धैर्य हो, क्षमा का भाव हो, बुरी बुराइयों से बुरी वृत्तियों को कंट्रोल करने का जिसमें सामर्थ्य हो,
चोरी का भाव जिसमें ना हो, पवित्रता हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, सत्य हो, बुद्धि हो, विद्या हो, सत्य हो, अक्रोध हो, इस प्रकार के ये जो 10 गुण हैं, इनको धारण करने वाला व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। इसलिए जब हम इन 10 गुणों को धारण करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इन 10 गुणों को सभी धारण ही कर लें, इनमें से अगर कोई एक भी गुण को धारण कर लें, हमारे यहाँ तो पौराणिक आख्यानों में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें इस प्रकार के गुणों का निरंतर प्रभाव भी रहा है और इस प्रकार के गुण जिनमें रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम को तो धर्म का साक्षात स्वरूप कहा गया, क्योंकि उनमें ये सारे गुण थे। आप देखिए कि जब उनको राज सिंहासन प्राप्त होना था तो वनवास हो गया, लेकिन वनवास होने पर वो निराश और हताश नहीं हुए, वो मुस्कुराते हुए वनवास को स्वीकार करके वन की तरफ प्रस्थान कर गए। और वन में तरह तरह की आपत्तियां विपत्तियां आई, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं हुए, उनके धैर्य की परीक्षा होती रही। और यहां तक कि माता सीता का अपहरण हुआ, खोजबीन करने पर पता चला कि अशोक वाटिका में, लंका में राक्षसों की कैद में मां खतरे में है। एक सामर्थ्य संपन्न पति जिसकी पत्नी का अपहरण हुआ हो, अगर उसको पता चल जाए कि अमुक स्थान पर वो हैं और खतरे में हैं, तो वो बिना कोई समय गवाए जो कुछ कर सकता हो करेगा। लेकिन भगवान श्री राम ने मर्यादा का परित्याग नहीं किया। लंका की तरफ जब प्रस्थान किया तो बीच में सागर था, सागर के उस पार जाना था, तो भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि इमरजेंसी है तुरंत रास्ता खाली करो। वो 3 दिन तक सागर के किनारे बैठ करके सागर से अनुनय विनय करते हैं, लेकिन जब 3 दिवस बीत गए लेकिन सागर पर कोई असर नहीं हुआ, तो भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, मैं अग्निबाण का संधान करके इसी क्षण सागर को सुखा दूंगा। लक्ष्मण तो इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे, दौड़ करके धनुष बाण लाते हैं और अग्निबाण का संधान होता है। अग्नि ज्वालाएं प्रस्फुटित होने लगती हैं। सागर ने सोचा था पता नहीं कौन भिखारी है, ऐसे कैसे रास्ता दे दे, लेकिन जब अग्निबाण से अग्नि ज्वालाएं प्रस्फुटित होने लगी तो त्राही त्राही करता सागर आ गिरा चरण में। कवि लिखता है 3 दिवस तक पंथ मांगते बैठे रघुपति सिंधु किनारे, उत्तर में जब एक नाद भी मिला नहीं सागर के स्वर से, उठी अधीर धधक पौरुष तब राम के सर से। 3 दिन तक बैठे रहे, सागर पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अंततो गत्वा जब अग्निबाण का संधान हुआ तो त्राही त्राही करते हुए सागर चरण में आ गिरा। और उसके बाद धर्म का जो दूसरा लक्षण था क्षमा, उसका दर्शन होता है। जब सागर चरणों में आ गिरा तो भगवान श्री राम ने सामर्थ्य संपन्न होते हुए, दंड देने में समर्थ होते हुए वो उसको क्षमा किया। केवल क्षमा ही नहीं किया, उसके शत्रुओं का भी संहार उस अग्निबाण से किया। ऐसा हमारे जैसा कोई व्यक्ति हो, उसके साथ इस प्रकार का हुआ हो, तो हम बोलेंगे कि नहीं हमारा आपने समय वेस्ट किया, हम तो आपको दंडित करेंगे ही। लेकिन भगवान श्री राम ने दंड देने में सामर्थ्य होते हुए उनको क्षमा किया, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा भी उसी को शोभा देती है जिसके पास दंड देने का सामर्थ्य हो लेकिन फिर भी छोड़ दे। इसलिए धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनमें पहला है धैर्य, दूसरा है क्षमा, तीसरा है दम। दम का मतलब होता है बुराइयों को कुचलने का सामर्थ्य होना। चौथा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी का भाव न होना। चोरी का मतलब ये नहीं है कि किसी का जेब काटना या पर्स छीन लेना।
चोरी का मतलब जो दायित्व जिस व्यक्ति को दिया गया है उसको अगर वो निष्ठा से नहीं पूरा कर रहा है तो वो चोरी कर रहा है। जैसे अध्यापक अगर निष्ठा से पढ़ा नहीं रहा है तो भी चोरी कर रहा है, छात्र अगर निष्ठा से पढ़ नहीं रहा है तो वो भी चोरी कर रहा है। इसलिए अस्तेय का भाव। पांचवा गुण है शुचिता, पवित्रता। ये पवित्रता भीतर की भी है और बाहर की भी है। बाहर तो हम स्नान करके साबुन, शैम्पू, तरह तरह के ऐसे संसाधनों से अपने को स्वच्छ कर लेते हैं, लेकिन भीतर की स्वच्छता स्वाध्याय से, तप से, साधना से, उपासना से, ध्यान से, इन सब से होती है। छठा गुण है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण। आप देखिए कि आंखें बोलती हैं सुंदर सुंदर देखो, कान बोलते हैं कि अच्छा अच्छा सुनो, जिह्वा बोलती है सुस्वादु खाने को मिले, नासिका बोलती है अच्छी सुगंध मिले, त्वक बोलती है अच्छा स्पर्श हो। जब ये अच्छा अच्छा नहीं होता तो अच्छा करने की अपेक्षा से व्यक्ति बुरा बुरा करना शुरू करता है, जिसको हम कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार इस प्रकार की संज्ञाएं देते हैं। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का रास्ता फिर तिहाड़ की तरफ चला जाता है। इसलिए छठा गुण इंद्रिय निग्रह। सातवां गुण बुद्धि। हम कोई भी काम करें बुद्धि के अनुसार करें। हम कभी भी कोई भी काम करने लगते हैं, हमारे सामने हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। एक वो होता है जो केवल हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हो, और दूसरा वो होता है जो हमारे भले के लिए हो। जैसे आप सब संकल्प लेते हैं रात को कि हम सुबह 5 बजे उठ करके वॉक करेंगे, अपने को स्वस्थ रखेंगे। रात को संकल्प लेते हैं कि आज से जल्दी सोना शुरू करेंगे और सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे। जैसे ही सुबह होती है आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आज से आपने उठ करके अपने को स्वस्थ रखने के लिए ये प्रतिदिन का कार्य करना है। फिर दूसरी आवाज़ आती है, नहीं आज का दिन 1 घंटा सो लें, कल पक्का। ये पहली आवाज़ है बुद्धि की जो जगाती है, लेकिन दूसरी आवाज़ है मन की जो बोलता है नहीं आज 1 घंटा और सो लो, कल से पक्का। अब व्यक्ति एक आवाजें दो एक समय में एक ही मान सकता है। बुद्धि की मानी तो बुद्धिमानी, और मन की मानी तो मनमानी। मनमानी खड़ा करती है परेशानी। इसलिए बच्चों को हमेशा बुद्धि के अनुसार अनुगमन करना चाहिए। बुद्धि की बात को मान करके चलेंगे तो हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक परिणाम आएंगे। 8वां गुण है विद्या। विद्या कोई सीमित नहीं होती, और कोई 2-2, 3-3 विषयों से पीएचडी ये समझे कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, तो ये उसकी भ्रांति है। ज्ञान अनंत है और व्यक्ति को हमेशा सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। एक विद्वान सागर के उस पार जाने वाला था, नाव में बैठा, मल्लाह से पूछा, जो विद्वानों की प्राय आदत होती है, बैठते ही पूछने लगते हैं आप कितने पढ़े हैं, क्या क्या करते हैं। तो मल्लाह ने कहा साहब मैं नहीं पढ़ा। कहा अंग्रेजी पढ़ी, नहीं पढ़ा। 25% जीवन बेकार। अच्छा मैथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा। 35% जीवन बेकार। हिंदी पढ़ी है, नहीं पढ़ा। 45% जीवन बेकार। इतने में तूफान पड़ जाता है। मल्लाह पूछता साहब तैरना जानते हैं? कहता नहीं। तो बोले मैं तो चला, अब आपका 100% बेकार। इसलिए ज्ञान को कभी छोटा ना समझें। हर व्यक्ति महान है, हर व्यक्ति के भीतर अपने आप की एक विशेषता है, और उस विशेषता को नमन करते हुए उसे सीखने की प्रवृत्ति हमको बनाए रखनी चाहिए। कोई ये समझ ले कि मैंने इतने विषयों में इतना कुछ किया है, मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, ये नहीं। काम कोई छोटा नहीं, ज्ञान कोई छोटा नहीं। इसलिए सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति दे। मुक्ति का मतलब केवल जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं, जो भी तात्कालिक समस्या हमारे सामने हो उसका जो यथार्थ समाधान दे, वह मुक्ति है। अभी आप सबको हमारे भाषण से मुक्ति चाहिए, तो
इस प्रकार से मुक्ति जो है वो हर कदम पर व्यक्ति को चाहिए होती, लेकिन हमारे ऋषियों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी, बार बार जन्म लेना, जन्म लेके कर्म करना और कर्मानुबंध में फंस जाना। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस भव चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, इसके लिए मुक्ति की परिकल्पना की गई। लेकिन मुक्ति तो कदम कदम पर चाहिए होती है। जब बच्चे की परीक्षा जिस दिन खत्म होती है उस दिन बोलता आज मुक्त हुए। तो इस प्रकार से जो यथोचित समाधान दे वह मुक्ति है। इसलिए ज्ञान हमेशा मुक्ति देता है। जो भी जिससे संदर्भित ज्ञान हो वह उससे संबंधित समस्या का सही सही समाधान करता है। इसलिए 8 गुण, 9वां गुण है सत्य। सत्य बड़ा कठिन है। सत्य क्या है? हम अगर इसको सामान्य भाषा में कहें तो वाणी और मन की एक रूपता का नाम है सत्य। होता क्या है, यहाँ से चल रही है निंदा और यहाँ आते आते नमस्ते। जैसे हम किसी छात्र से कक्षा में पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, उसको नहीं आता, तो हम उसको डांटते हैं। जब डांटते हैं तो उसके मन में हमारे प्रति कोई अच्छा भाव तो पैदा होगा नहीं। दूसरे दिन जब हम कहीं ग्राउंड में दिखाई देंगे तो बोलेगा वो आ गया फलां 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 जो कुछ। जब नज़दीक आएंगे तो सर प्रणाम। ये भीतर से चल रहा था एक गाली का भाव, लेकिन मुंह पर जिह्वा पर आ गया प्रणाम। ये असत्य है। सत्य वो है जो यहाँ चले वही जिह्वा पर आए। तो वांग मनसयोः एक रूपता सत्यम, वाणी और मन की एक रूपता का नाम है सत्य। इस प्रकार का व्यवहार होना हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। और उसके बाद अंतिम जो उसका है अक्रोध, क्रोध का भाव न होना। ये जो 10 गुण है, इन 10 गुणों को धारण करने वाला ही धार्मिक कहलाता है, वही धार्मिक है। अब आप बताइए कि इन 10 गुणों में किसकी निंदा है? ये तो इंसान को इंसान बनाने के लिए है। दुनिया के धरातल में जहां कहीं भी इन गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति है वह भारतीय है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि भारत ही इस विद्या को इस रूप में देने वाला है। और आज हम सबका ये सौभाग्य है कि इस देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो केवल भारत में यशस्वी नहीं है, लेकिन विश्व में जिसकी कीर्ति पताका फहरा रही है और विश्व के नेताओं में जो अग्रगण्य है। और आप सबका तो ये सौभाग्य है कि वो इस काशी नगरी का साक्षात प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे नेतृत्व के नीचे हम सब काम कर रहे हैं। भारत का ये अमृतकाल केवल स्वतंत्रता की दृष्टि से नहीं है, ये विद्याओं, भारतीय विद्याओं की विश्व पटल पर पुनः स्थापना के लिए भी अमृतकाल है। ऐसे अमृतकाल में हम सब संकल्पित होकर के आगे बढ़ें। मैं उन बच्चों को भी बधाई देता हूं जो आज पुरस्कृत होने वाले हैं, और पुरस्कृत होने वालों के साथ साथ जिन्होंने प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और हार गए, उनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि हारने वाला ना हो तो जीतने वाला कैसे जीतेगा। इसलिए हारने वाला भी बधाई का पात्र है, और वो ये संकल्प ले कि मैं हारा हूं कभी ना हारने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति हार को हराता है वो हार को हरा करके हार पहनता है, और जो हार को हराकर हार पहनता है जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कदम पर उसको उपहार मिलता है। इस प्रकार का संकल्प ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। बच्चे ये संकल्प लें कि आज उस बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन करके अपना नाम कमाया, मैं भी इससे प्रेरित होकर के अग्रिम वर्ष जब ये समय आएगा तो मैं इससे अच्छा प्रदर्शन करके इस स्थान पर मैं जाऊंगा। इस भाव को पैदा करने के लिए संस्थाएं इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं, और जिन बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी वो सचमुच में अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और जिन आचार्यों ने इनको तैयारी करवाई और जिनकी देखरेख में ये सारी गतिविधियां चल रही हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वर्धापन। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir, for acknowledging us with such great words of wisdom.
we are profusely elated to have the gracious presence of Dr. Prithvish Nag. May I have the honor to call Sir to share his words with the gathering. Good evening, everybody. Professor B.L. Sharma ji, Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of Sampurnanand Sanskrit University. Shri Pradeep Baba Madhok ji, Madam Pooja Madhok ji, Shri Mahir Madhok ji, Additional Director, Shri Ajit Singh ji, teachers of Dalimss, Ramkatora and other branches, and dear students. This is not the first time I am here with you all. When I joined Kashi Vidyapith in 2011, I clearly recall that the first school who invited me for any function was Dalimss Ramkatora. And I'm delighted to be here again in this school after 12 years as well. So that I have got a very old connection, old relationship with Dalimss as well as with the Ramkatora branch. Friends, I have been patron of this group as well. So my connections are very close to the whole setup. Earlier, the last event when I came here, it was related to the G20 function, and today also I find that this annual function is an extension of the G20, showing the temper and the heights which a student can attain while doing several activities which we will be witnessing today. Friends, technology, knowledge, and the scientific temper all put together, that will shape the world. In G20 and SDP also, these things are put in, and there is a scope, there is a provision for students to participate in these activities as well. The earlier activities which I've witnessed was also an extension of what SDP 17 and the different type of sub-themes which were related to it. They were how it is affecting the students. I'm sure the students here will take this opportunity, understand the global scenario, be part of the global activities, global initiatives, and will able to show what a student from Dalimss group or from Ramkatora per se will make an impact in the whole world. So I feel that the students here have a very great role in shaping the world. I'm sure the guardians here will also realize that they have put their students in the right place so that they can mold themselves in order to take the whole world on their shoulders. Friends, I thank you very much for giving me an opportunity again to be in this function and to share my views with you all. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing with us such profound thought. Every year, our annual function revolves around a unique theme that captures the essence of our institution. This year, the theme is G20 Summit and Sustainable Development Goals. There were 19 countries and the European Union which participated in the G20 Summit. It is important for every country to have their own dance forms besides the heritage and culture, because dance forms are a way to communicate to the people. It is a way to represent their culture and civilization. So, we have the different dance forms of few of the countries representing their culture and civilization. Very soon, we are going to present a plethora of dances before you all. Now, without further ado, to kickstart this evening of splendor, we will have a mesmerizing performance by our talented students.
Get ready to be enthralled by their creativity, passion, and dedication. Assalamu alaikum. Shabal Noor. Maharba. Yatik al Afiya al Mamalik al Arbiya. We come from the kingdom of humanity with justice, growth, and vitality. With oil-rich sand and ocean serenity, we are wishing you all cherish prosperity. Although its ancient cultural and ancestral stories are embedded in its traditional costume. Welcome to the land of desert, Saudi Arabia. So live your life as though it's a dream. Ladies and gentlemen, to make this evening magical, let's groove ourselves to the tune of belly dance. Let's welcome them with a huge round of applause.
Now that was really vibrant. Can we give them a huge round of applause? Good evening, everyone. We are from the country of Nobel winning author Patrick White. Where picnics, family barbecues, and its undying tradition in instilling the high values in friendship are all essential to the Australian way of life. By the artistic vision of caring for tradition, we are imbibed with the emanating and captivating dance form ballet, while the dancers are ballerinas. So, let's welcome our ballerinas to represent the Australian ballet. Hold your breath and get ready for an enchanting performance. So, put your hands together for the participants of Australian ballet. The performance was alluring and bewitching indeed. We stand here today at the brink of something extraordinary. That's right.
We are honored to serve as your hosts on this auspicious occasion. It's the day where hope is reborn, dreams reshape, and a new journey unfolds. An inception of a dream and a step towards progress. Crucial as this event is, we are thrilled to welcome you to a world where each date is an opportunity and every moment is worth cherishing. Our calendar is more than just dates. It's a companion in our journey. Join us as we redefine the way we plan and connect. Indeed, it's the celebration of ambition, perseverance, and indomitable spirit of human ingenuity. Now, I would request all the dignitaries to be on the stage for the launching of Calendar 2024. The NEP 2020 aims to transform the Indian education system by making it more inclusive, flexible, and relevant to the changing needs of the society. With this implementation, our calendar encompasses the theme of NEP 2020 this year. Audience, please put your hands together for this special moment. We have taken NEP as the theme for the calendar of the academic year 2024-2025. Our dignitaries are unveiling the leaflets of the calendar. Indeed, it is a mapping of the future that is bound to create history. Audience, please put your hands together for this special moment. We have chosen NEP as the theme to provide equitable access to quality education to all the students irrespective of their socio-economic backgrounds, gender or physical ability, to promote a multidisciplinary approach and preserve their interest, to encourage creativity and critical thinking among students, and to promote a holistic development approach to education. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Please be comfortable at your seats. As one of the most influential writers of his time, Prem Chand is also known as the Upanyas Samrat or Emperor of Novels and Munshi, that is, the teacher of Hindi and Urdu literature. His early education was in Persian and Urdu, but later he learnt English, and despite facing financial difficulties, he pursued his passion in writing and became a prominent figure in the world of Hindi literature. Prem Chand has wrote about 300 short stories, several novels, and various essays discussing the social issues of that time, as he was deeply influenced by the political and social environment of that time. Prem Chand's writings often revolve around themes like caste discrimination, women's education rights,
and the struggles of the common people. Premchand's writing style is simple yet deeply insightful, and many of his stories contain strong moral messages. Very soon, you are going to witness some glimpses of one of his famous stories, Sawa Seed Gehu. आज हमारे लिए कितने गर्व और आत्मसम्मान का दिन है। हाँ, हम अपने प्यारे भारत को दिन पर दिन विकसित होते और उन्नति की राह में आगे बढ़ते देख रहे हैं और आज का स्वतंत्रता दिवस इसी का उत्सव है। हाँ, आज हम सब ने देखा डैलिम्स के सारे विद्यार्थी और शिक्षक उत्साह से भरे थे। सबकी आंखों में चमक थी। मैं तो उस कांटों से भरी राह के बारे में सोच रही हूँ जिस पर सैकड़ों वर्ष निरंतर चलने के बाद आजादी और आत्मनिर्भर होने के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। बिल्कुल, मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं के दृश्य याद आते हैं, जब निर्धनता, भूखमरी, साहूकारी, बंधुआ मजदूरी, जमींदारी जैसे जला देने वाले दृश्यों से समाज बार बार छलनी होता था। आओ सब मिलकर चलते हैं, उसी कल्पना में चलें जहां मुट्ठी भर अनाज और जीवित रहने के साधनों के लिए संघर्ष करते हुए शंकर पिसकर रह जाता है। शंकर की ये कहानी जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। कितने दुख, कितनी पीड़ा और महान संघर्ष किया है समय ने। इस संघर्ष में दुख है, दर्द है, संघर्ष है और उम्मीद भी। आओ सब मिलकर देखते हैं इस संघर्ष को। आओ सब मिलकर देखते हैं इस संघर्ष को। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जगिया से चल गईली सब कुछ भुलाई के, अरे जिंदगी भइल सुनसान हो। जा रे चन्ना लियाव खबरिया, जा रे सुगना लियाव खबरिया। हट सुगना, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम इतना धर्म कर्म किया करती हो, मुझसे कहीं इसकी हानि न हो जाए। कभी कोई विप्र या अतिथि या मुनि हमारे द्वार से भूखा न चला जाए। आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा।
आपके बारे में तो सारा गांव कहता है कि शंकर तो दानी है, वह खुद भूखा रह जाए लेकिन उसके द्वार से कोई भूखा ना जाए। प्रणाम मुनिवर। कैसे हो वत्स? अब हमारे संध्या पूजन और भोजन का प्रबंध करो। सुन रहे हैं? थोड़ा सा गेहूं आस पड़ोस से मांग ले, मैं कुछ बना दूंगी। ठीक है, मैं अभी आया। विप्र जी, क्या कुछ गेहूं मिल सकता है? एक मुनिवर अचानक आ गए हैं, उन्हें भोजन कराना है। ठीक है शंकर, भगवान इसे 1.25 सेर गेहूं दे दो। अभी देती हूँ। जाने कहां से चले आते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विप्र जी, धन्यवाद। ले भगवान, ये गेहूं है पूरे 1.25 सेर, पीस कर कुछ बना दे। हमेशा प्रसन्न रहो वत्स। अब हम चलते हैं, हमें दूसरे गांव में प्रवचन के लिए जाना है। भगवान, अब विप्र जी को 1.25 सेर गेहूं क्या लौटाऊं? खलिहानी देने जाऊंगा तो 1.5 पसेरी गेहूं अधिक दे दूंगा, और क्या। ठीक है, वैसे भी विप का अनाज रखना थोड़े ही है, थोड़ा बढ़ाकर ही दे देना। इस तरह शंकर ने विप्र जी को 1.5 पसेरी गेहूं अधिक दे दिया और निश्चिंत हो गया कि वह ऋण से उऋण हो गया। उसने यह बात विप्र जी से कही तक नहीं। लेकिन शंकर को यह नहीं मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूं का ऋण चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना होगा। शंकर, तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम लोगों के बीच खेत बाड़ी, बैल, अनाज सबका बंटवारा हो जाए। ऐसा मत करो मेरे भाई। प्रधान जी, पुरखों की आत्मा रोएगी, बहुत रोएगी। नहीं, अब बंटवारा हो ही जाना चाहिए। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। यह दुख मेरे लिए मरने के बराबर है। ठीक है, तब दोनों लोग कागज पत्तर बनवा लो। इसी दुख में धीरे धीरे 7 साल बीत गए और शंकर किसान से मजदूर बन गया। एक दिन वह मजदूरी करके लौट रहा था। शंकर, कल अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। 5.5 मन गेहूं कब के बाकी हैं और तू देने का नाम नहीं ले रहा है। इरादा क्या है? मैंने तुमसे कब गेहूं लिए जो 5.5 मन हो गए?
मेरे यहाँ किसी का एक पैसा या अनाज बाकी नहीं है। इसी नियत का फल भोग रहे हो। 1.25 सेर गेहूं याद है जो 7 साल पहले दिए थे? महाराज, मैंने कई बार आपको 2-2, 3-3 पसेरे गेहूं अधिक दिए हैं। हाँ, मैंने वापसी का नाम नहीं लिया। अब आप 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा? लेखा जो बख्शी 100। तुमने जो कुछ दिया उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे दो, जो लिखा है सो लिखा है। क्यों एक गरीब को सताते हो पांडे जी? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं कहां से लाऊंगा? चाहे जहां से लाओ, छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे तो भगवान के घर दोगे। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं। इसके बाद शंकर ने जी तोड़ मेहनत मजदूरी की। एक समय खाना खाया और एक समय भूखा ही सो गया। उसको 1.25 सेर गेहूं के दाम और ब्याज के मिलाकर 75 रुपए देने थे। साल भर मेहनत करके वह केवल 60 रुपए जुटा पाया। महाराज, महाराज, यह रही आपकी अमानत। अरे शंकर, किसी से उधार लिए क्या? नहीं महाराज, 1 साल की जी तोड़ मेहनत है। अपने हिस्से की रोटी छोड़कर ही बना पाया हूं। लेकिन यह तो केवल 60 रुपए है, बाकी के 15? बाकी के 2-3 महीनों में दे ही दूंगा। मुझे उऋण कीजिए महाराज, अब उऋण कीजिए। उऋण तो तभी होगे जब एक एक कौड़ी चुका दोगे। महाराज दया करो, मेरे पास एक रोटी का भी ठिकाना नहीं। कभी न कभी तो दे ही दूंगा। और शंकर गांव के हर घर में 15 रुपए मांगने गया, पर किसी ने नहीं दिए, क्योंकि कोई भी शंकर और विप्र की राह में नहीं आना चाहता था। और अंततः वह निराश होकर समझ गया कि अब वह उधार नहीं चुका पाएगा। और धीरे धीरे 3 साल बीत गए। शंकर, अब ब्याज मिलाकर पूरे 120 रुपए हो गए। इतने रुपए तो अब इस जन्म में नहीं हो सकते, दूसरे जन्म में ही दूंगा। इसी जन्म में लूंगा। मूल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। यह बैल ही बचा है, चाहिए तो ले जाइए। बैल लेकर क्या करूंगा? लेकिन एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? कुछ है। तुम तो हो। तुम दूसरे की मजूरी करने की जगह ब्याज में हमारी मजूरी क्यों नहीं करते? कोई तुम्हारे पास जायदाद तो है नहीं। आखिर मैं अपने पैसों का भरोसा कैसे करूं? ऐसे में कम से कम सूद तो कटता रहेगा। महाराज, सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? अरे तुम्हारी घरवाली और लड़का क्या हाथ पैर कटा के बैठे हैं? तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दूंगा और साल में 1 कंबल भी। महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई, पूरे जन्म की गुलामी समझो चाहे मजूरी। मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह शंकर विप्र के यहां बंद हुआ मजदूरी करने लगा। उसने 20 साल तक जी तोड़ मेहनत की, पर 1.25 सेर गेहूं का कर्ज नहीं उतार पाया। और आखिर एक दिन उसने दुनिया छोड़ दी।
हरिया, अब आज के बाद तुम अपने पिता की जगह मजूरी करोगे जब तक तुम्हारा ऋण उतर ना जाए। नहीं, पापा, पापा, पापा। इस तरह शंकर का बेटा पिता की जगह बंधुआ मजदूर हो गया। अब जाने इसका उद्धार कब और कैसे होगा, या होगा भी कि नहीं। यह था शंकर का दुख और हमारे समाज के काले कानूनों की परछाई। हालांकि अब हम इससे बहुत आगे आ गए हैं। आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन, बैंकों से कर्ज, किसान निधि, उज्ज्वला, आयुष्मान और ढेर सारी योजनाओं से गरीबों और किसानों को मजबूत बनाया गया है। हाँ, अब कोई भी शंकर 1 किलो गेहूं के बदले 25 साल मजदूरी नहीं करेगा। इसमें सरकार के साथ हमारा समाज भी गरीबों और किसानों के साथ खड़ा है। यही है हमारा प्यारा भारत, नया भारत, जिसमें किसान श्रमिक खुश है, स्वस्थ है। आओ सब मिलकर देश को और आगे बढ़ाएं। This performance has added a diamond to the crown. Can we give a huge round of applause to all the participants? This act has really made us think that the average person is still under the aberrant delusion that food should be somebody else's responsibility until we are ready to eat it. As a matter that has been a source of concern to the leaders of the G20 summit, our students felt compelled to bring your attention to the importance of food security. With this enlightening skit, the students wished to remind you all that there exists a contradiction in society where some have plenty while the others go to bed hungry. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it. A good faculty creates an environment which gives the scholar the encouragement to fly. Now, may I have the honor to call upon the Dean of Academics, Mr. S. Day. Sir, kindly share your golden words with us. Most respected Dr. Bihari Lal Sharma, Vice Chancellor, Sampurnanand Sanskrit University, Dr. Prithvish Nag, ex-VC, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit, Dr. Pradeep Baba Madhok, President, Dalimss Group of Schools, Mrs. Pooja Madhok, Director, Dalimss Group of Schools, Mr. Mahir Madhok, Additional Director, Dalimss Group of Schools, Mr. Ajit Singh, Special Guest, Heads of various schools, Coordinators, Teachers, Parents, and most importantly, my dear students. The bend of the road is not the end of the road if you know how, where, and how to take the turn. This is what Dalimss is all about. I would like to start my presentation with a cue from where Dr. Prithvish Nag has left. Sir, you during your speech has told that you have come back to Dalimss and taken the stage after 13 years. The case is similar with me.
I also came and took the stage of Dalimss after 13 long years. 13 years before, I took the Dalimss stage as a principal Dalimss Sigra, and today I am taking the stage to speak and share the 50 years of glorious journey of this particular institution as the Dean of Academics and Quality Circle of Dalimss. Well, I have been given an onerous responsibility of sharing the Dalimss 50 years or 5 decades of journey. Here goes the presentation, because I'll try to cut it very short because lots of programs are in the offing. A dream does not become a reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. The epoch-making journey of Dalimss, which today has 21 branches, catering to the needs of more than 25,000 students, and with 2,800 educators, with 21 campuses, started way back in 1972, when Mrs. Dish Ishrat, loving mother of our President Sir, quit her job and conceptualized a revolution in the educational scenario. Here we have, can we come on to the previous slide? The next one. Okay, there might be some technical glitch, no issues. Here we have the photographs of our founder parents, Dish ma'am and Amrit sir. Let's move on to the next slide. The journey of Dalimss under the leadership of Dr. Pradeep Madhok and Mrs. Pooja Madhok, and today the energetic and dynamic Mr. Mahir Madhok, Mrs. Fiza Babbar Madhok and Mrs. Alisha Madhok Walia is a perfect example of determination, foresight and perseverance. Dalimss, since its inception, metamorphosed the students into humble, articulate and responsible global citizens. You can see these are the people who are the driving force of Dalimss. Let's move on to the next slide. We have the pictures of the Dalimss core branches, the branches which are in Varanasi. This consistency in vision gave birth to Sigra in 1994, Lahurabir in 1995, Rohania in 2000, Mohini Kunj in 2005, Ramkatora in 2007, Khajuri in 2007, Pahadia in 2010, Toddler and Kids in Ramkatora in 2015, and Toddler and Kids in DIG Colony in 2020. Let's move on to the next slide. Besides this, we had a long journey. We have now extended our wings beyond Varanasi, and we are having 17 associate schools, and more are yet in the offing. We have started with Jaunpur in 2009, Ghazipur in 2009, Azamgarh 2011-12, Obra in 2012-13, Renukut in 2013-14, Chakia in 2014-15, Sultanpur 2015-16, Shahganj in 2016-17, Kuchuman in 2016-17, Syed Raja 2016-17, Dillar Nagar 2017-18, Chimia in 2017-18, Gandhinagar 2018-19, Rampur 2020-21, Jalalabad 2022-23, Chandauli 2023-24, Mau in 2023-24, and more are yet in the offing in the next academic session. We move on to the laurels and the accolades that the institution has received in the last few years. I'm just going to mention the few best laurels. We have the Top Schools of India Award, the Best Emerging CBSE School in UP, Best High-Tech Day Boarding cum Residential School by India Award, Best High-Tech Day Boarding cum Residential School, Best Infrastructure CBSE School in UP, IES Awards 2019, Best School for Innovation and Value-Based Education by Education World, Education Excellence Award by Education Today, #1 in Quality in Education in UP in the CBSE category. Let's move on to the most important thing that an educational institution actually boasts of, that is the academics. As we all know that the toppers in the AISSE as well as AISSC every year
is above 95%. Here is the result of Dalimss AISSE as well as AISSC in the last 3 years. In the last 3 years, we have, these are the achievers of class 12 CBSE result 2022-23. We move on to the next important part, that is the teachers training, the workshops. Dalimss believes in empowering teachers by way of training them. Faculty members are being sponsored to nurture their skills and talents to become more effective. Quickly, we move on to the next important slide, the picture of Dalimss alumni. We can see lots of our students who are doing exceedingly well in life. We are having more, but only few of the alumni we could display. Let us quickly move on to the next slide. That is the picture of the Sunbeam World School. In addition to the core branches and the associate schools, we are also having the Sunbeam World School. Addition to all this is the Sunbeam World School, a live K-12 India's leading online school. The students are only to log in and they are in the school with their best online schools. The previous slide, class 10 toppers. Before this. So these are the class 10 toppers. Thank you, sir. At last, let us show you the Dalimss family. These are the CBSE events that the school has organized. The online school. And here we have the entire Dalimss family, more than 25,000 students, 2,800 plus educators, 20 plus campuses, and 50 plus accolades or awards. And this is the Dalimss family. You can see the entire Dalimss management, the team of teachers at one place. Dear students and dear parents, let me conclude with a very small note. Your children are in safe hands. Please have faith in the system. Please show that you are a part of the system, and let us join hands so that you and me can shape a better world for the children tomorrow. Thank you very much. Have a good day. Thank you, sir, for your inspiring and insightful message to us.